गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है पंजाब हरियाणा कनाल वाटर डिस्प्यूट। तो ये आपके पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो है उन्होंने भी रिसेंटली पंजाब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को बुलाया था और कहा था कि ये SYL जो डिस्प्यूट है, कनाल वाटर डिस्प्यूट, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये डिस्प्यूट के बारे में देखते हैं हम। तो ये रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है एक्चुअली 1966 से चला आ रहा है। तो इसमें रावी और ब्यास जो रिवर्स हैं उनको दोनों स्टेट्स के बीच में कैसे डिवाइड किया जाए, उससे रिलेटेड ये डिस्प्यूट है। तो हुआ क्या था एक्चुअली, जब है यूनियन गवर्नमेंट ने 1955 में एक मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, उस टाइम पर पंजाब डिवाइड नहीं हुआ था, अनडिवाइडेड पंजाब था। तो इन तीनों स्टेट्स में 8 जो है MAF जो है वो राजस्थान को, 7.2 पंजाब को और 0.65 जम्मू कश्मीर को जो है वो आपके जो रावी और ब्यास का पानी दिया गया था। लेकिन सेंटर ने फिर जो है जब पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ तो जो है 3.5 MAF हरियाणा को दिया और बाकी का जो 7.2 MAF में से बचा वो पंजाब को दिया। लेकिन 1981 में जो है रीअसेसमेंट की गई और कहा गया कि ब्यास और रावी का जो पानी है वो बढ़ चुका है, इसलिए अब जो है बढ़ाकर जो है आपको एलोकेशन पंजाब को और बाकी स्टेट्स को दी गई। अब SYL कनाल इशू कहाँ से आया फिर? तो 1982 में प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंदिरा गांधी जी, उन्होंने SYL कनाल की कंस्ट्रक्शन जो है वो लॉन्च कर दी कपूरी विलेज ऑफ पटियाला डिस्ट्रिक्ट में। अब ये कनाल बनाई जानी थी जिसमें कि 122 किलोमीटर की कनाल पंजाब में होती, 92 किलोमीटर की कनाल जो है वो हरियाणा में होती। तो जुलाई 1985 में अकाली दल के जो चीफ हैं जो है उन्होंने अकाली दल ने एजिटेशन लॉन्च किया अगेंस्ट दिस कनाल। और अकाली दल के उस टाइम के जो चीफ थे लौंगोवाल जी, उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के साथ अकॉर्ड साइन किया और कहा कि एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे हम और वो असेस करेगा कि कितना वाटर कौन सी स्टेट को जाएगा। अब ये इरादी ट्रिब्यूनल बनाया गया और इस ट्रिब्यूनल ने जो है रिकमेंडेशन किया कि पंजाब और हरियाणा दोनों को ही जो है वो इंक्रीज जो है वो वाटर शेयर मिलेगा। अब फिर एरा ऑफ मिलिटेंसी आया, तो जो लॉन्गोवाल थे उनको भी मिलिटेंट्स ने मार दिया, जो चीफ इंजीनियर उस कनाल पर काम कर रहे थे उनको भी मार दिया, जो फिर लेबरर्स थे उनको भी मार दिया गया। तो पंजाब के लीडर्स जो हैं वो टाइम एंड अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप इस इशू को दोबारा मत उठाओ, वरना जो है ये मिलिटेंसी का कार्ड जो है वो खेलते हैं। ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट क्या है पंजाब का? पंजाब का ये आर्ग्यूमेंट है कि पूरी इस जो स्टेट के बहुत सारे जो रीजन्स हैं वो आफ्टर 2029 जो है वो ड्राई हो जाने वाले हैं। अब ये रीजन जो है बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर चुका है इरिगेशन पर्पस के लिए, तो ओवर एक्सप्लॉयटेड है ये रीजन। और 79% ऑफ द स्टेट जो है वो लगभग ओवर एक्सप्लॉयटेड है ग्राउंड वाटर से। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि वाटर शेयरिंग तो जो है किसी और स्टेट के साथ वो हम नहीं कर सकते। लेकिन हरियाणा कहता है कि हरियाणा में भी तो जो है 1700 फीट तक का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो चुका है, खासकर सदर्न पार्ट्स में, और ड्रिंकिंग वाटर तक की प्रॉब्लम आने वाली है। और सेंट्रल फूड पूल में जो है उनकी भी तो कंट्रीब्यूशन है, तो उनको उनका राइटफुल शेयर जो है वो वाटर से डिनाई क्यों किया जा रहा है, जो आपके ट्रिब्यूनल ने भी असेस करके बोला है कि वो उनका राइट है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। इन उसके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो है ये बिंड स्कीम जो है, जिसको आप ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम कह रहे हो, ये अप्रूव कर दी है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बेसिकली आपके प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये स्कीम निकाली गई है। OB वैन्स परचेज करना, डिजिटल अपग्रेडेशन करना उनके स्टूडियोज़ के, उसके लिए ये स्कीम निकाली गई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कलर कोडेड वेदर वार्निंग। तो ये आपके ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडिया के मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट इशू किया है दिल्ली NCR रीजन में और कहा है कि मिनिमम टेम्परेचर्स बहुत तेज़ी से जाने वाले नीचे। अब ये कलर कोडेड वेदर वार्निंग होती क्या है? तो बेसिकली जिस हिसाब से कलर होता है उसके हिसाब से उतनी ही सीरियस वो वार्निंग होती है। इवन जो है सिर्फ सिर्फ सर्दी के लिए ही नहीं, फ्लड आनी हो अगर, उसके लिए भी जो है ये वार्निंग्स इशू की जाती हैं। तो ग्रीन मतलब कि सब कुछ सही है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। येलो मतलब अवेयर रहो। ऑरेंज का मतलब तैयार रहो, एक्सट्रीमली बैड वेदर आने वाला है।
और उससे रोड और रेल क्लोजर्स तक की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रेड का मतलब जो है अब वो एक्शन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वेदर वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैड हो चुका है। अब इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है? मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, सिस्मोलॉजी करने के लिए जो है इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है। ऑब्जर्वेशन स्टेशंस लगाए हुए हैं इन्होंने अक्रॉस इंडिया और अंटार्कटिका। फोरकास्टिंग, नेमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वार्निंग्स फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का काम भी आईएमडी ही करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया है साइलेंट वैली नेशनल पार्क में ऑन द 30th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट बर्ड सर्वे ऑफ इन साइलेंट वैली। और ये अकेला जो है वो केरला के रेन फॉरेस्ट में रह गया है, ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब ये साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नीलगिरीज में पड़ता है। यहाँ से एक पेरेनियल रिवर निकलती है, पेरेनियल मतलब पूरे साल बहती है जो रिवर कुंथी पूजा, वो यहीं से निकलती है, वो मतलब यहाँ से पास होती है। और बहुत सारी हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए ये साइलेंट वैली पार्क जाना जाता है। इवन इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप्स इरूलास, कुरुम्बास, मोडुगास, काटूनाकास, ये सब भी जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वीरोवोर। तो ये आपके साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन के, उन्होंने पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे हैं जो कि वायरसेस को खाते हैं। तो इनको हम नाम दिया गया है वीरोवोर। तो ये एक्चुअली स्पीशीज़ ऑफ प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट क्या होता है? सिंगल सेल जो है यूकैरियोटिक एनिमल जो है आपके एनिमल्स हैं ये, या आप इनको ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, नॉट एनिमल्स। ना तो ये एनिमल है, ना ये प्लांट्स हैं, ना ये फंजाई हैं। तो ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो वायरसेस को खाते हैं। जनरली न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बने होते हैं। तो इससे हम ऑफ कोर्स इनका हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में कोई भी वायरस से फाइट करने में, है ना। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि 2600 करोड़ की लागत के साथ जो है वो सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल में बनाया जाएगा। सतलुज रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होंगे। 1382 मिलियन यूनिट्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। और इसकी 13% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आने वाले कई सालों तक, रादर हमेशा के लिए, जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसलिए बनाए जा रहे हैं ये प्रोजेक्ट ताकि नॉर्दर्न रीजन में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स। तो ये आपके इन्वायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो साउथ कोरिया के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक न्यू वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया है जो कि इवन माइक्रो प्लास्टिक्स को भी फ़िल्टर आउट कर सकता है। तो ये प्लास्टिक जो है, माइक्रो प्लास्टिक्स आपके टाइनी बिट्स ऑफ जो है प्लास्टिक जो इन्वायरमेंट में मिलते हैं उनको हम कहते हैं। यूएस का जो नोआ है वो कहता है कि माइक्रो प्लास्टिक की जनरली जो लेंथ है वो 5 मिलीमीटर से कम होती है। दो तरह के माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो होते हैं जिनको आप डेलिबरेटली कमर्शियली यूज़ के लिए जो है वो डिज़ाइन करते हो, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में डालने के लिए। सेकेंडरी वो होते हैं जो आपके लार्जर प्लास्टिक में से इनएडवर्टेंटली या फिर बिकॉज ऑफ जो है इरोजन या बिकॉज ऑफ जो है ब्रेक डाउन जो है जैसे वाटर बॉटल्स में से निकल आते हैं। तो प्राइमरी तो हम खुद बनाते हैं, सेकेंडरी जो है वो बनते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ प्लास्टिक से। नेक्स्ट हम टॉपिक है, हमारा टॉपिक है हाई पावर लद्दाख कमेटी। पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक हाई पावर्ड कमेटी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स द्वारा जो है वो चेयर करके बनाई गई है। अब ये कमेटी जो है ऐसे मेजर्स बनाएगी जिससे कि यूनिक कल्चर और लैंग्वेज ऑफ लद्दाख रीजन को है प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रोटेक्शन की जा सके लैंड और एम्प्लॉयमेंट की उस रीजन की, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जा सके लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ऑफ ले एंड कारगिल को एम्पावर करके। अब ये कमेटी क्यों बनाई है? क्योंकि अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने उसको हटा दिया था अगस्त 2019 में। तो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है लद्दाख की, वो कह रही थी उनके लैंड की प्रोटेक्शन और रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन, उनकी जॉब्स की प्रोटेक्शन जो है वो उनको करने की ज़रूरी है। इसलिए उनको 6 शेड्यूल एरियाज़ में जो है ऑफकोर्स हमने डाला ही हुआ है। तो 6 शेड्यूल एरियाज़ हमारे आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाई गई हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में। ऑफ कोर्स लद्दाख में भी बनाई गई है, जैसे हमने देखा जो है आपकी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ऑफ लेह एंड कारगिल। So now let us see all these topics in English.
So the first topic is Punjab Haryana Canal Water Dispute. So this topic is important for your polity and governance section. So Union Jal Shakti Minister recently invited both the CMs of Punjab and Haryana, and the meeting was meant to resolve the issue of SYL canal, but the meeting over the issue remained inconclusive. So what is this river water dispute? So actually the dispute pertains to Ravi and Beas rivers, and it dates back to 1966 when reorganization of Punjab occurred. So Punjab is opposed to sharing any waters with Haryana, citing riparian principles. So what is the problem here? So Union government in 1955 divided the waters of Ravi and Beas between three states: Rajasthan, the then undivided Punjab, and Jammu and Kashmir. And a decade after reorganization of Punjab, the central government issued a notification allocating 3.5 units of water to Haryana out of 7.2 MAF to Punjab, uh, and the rest of the water to Punjab out of undivided Punjab's share. So, but in 1981, it was reassessed that the waters flowing into Biasan River have increased. Thereby, increased allotment was given to Punjab and other states, including Haryana. Okay. So, what is the SYL canal issue then? So, in 1982, Prime Minister Indira Gandhi started the construction of SYL canal in Kapuri village of Patiala district, and the aim was to have a stretch of 214 kilometer constructed between Punjab and Haryana, out of which 122 kilometer was to cross Punjab and 92 kilometer was to be constructed in Haryana. So the Haryana side has constructed its canal, but of course, the Akalis launched an agitation in the form of Kapuri Morcha against construction of canal in the state. And in July 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi signed an accord with Longowal and the then Akali Dal chief, and this accord agreed for creation of a new tribunal to assess the water. So, Eradi Tribunal was formed by Supreme Court judge, and it was headed by a Supreme Court judge, and it found that there should be an increase in the shares of both Punjab and Haryana uh, in 1987. But then the era of militancy began. Longowal was killed by militants. The chief engineer and the superintending engineer who were working on this project were killed. Laborers were shot dead. So the Punjab leaders have been warning the center that this issue should not be raked up again. So the state of Punjab is saying that many areas in Punjab will go dry after 2029 because they have overexploited their groundwater for irrigation purposes. Water in about 79% of state's area is overexploited, and government of Punjab is averse to the idea of sharing water with any outside or any other state. But the state of Haryana is making a claim also. It is saying that underground water in the southern parts of the state has also been depleted because of course, irrigation reasons, and it is also having a problem of drinking water. So Haryana has cited that it also contributes similarly to the central food pool, and why then it is being denied its rightful share in the water, even as assessed by a tribunal. So the next topic is broadcasting and infrastructure development scheme. So this topic is important for your governance section and also your economy section. So Cabinet Committee on Economic Affairs has recently approved the proposal of Ministry of Information and Broadcasting regarding this particular scheme. It's a central sector scheme. The aim of this scheme is to develop the infrastructure for Prasar Bharati, purchase of OB vans, digital upgradation of Doordarshan and AIR studios will be done through this particular scheme. So the next topic is color coded weather warning. It is important for your geography section. So recently India's meteorological department has issued an orange alert in Delhi NCR region, and it has said that the minimum temperatures will drastically come down in this region. And this color coded weather warning is given to explain the severity of the weather phenomena, and it is also used for floods, forecasting, etc. Green means that everything is well. Yellow means that be aware of the emerging situation. Orange means be prepared for that situation because it is going to happen. Red means now you should take action because the extremely bad weather conditions are certainly going to disrupt the region.
Indian Meteorological Department is responsible for meteorological observations, weather forecasting, and seismology in India. And the nodal ministry for it is Ministry of Earth Sciences. It operates hundreds of observation stations across India and Antarctica. It is also having the responsibility of forecasting, naming, and distributing warnings for tropical cyclones. So the next topic is Silent Valley National Park. This topic is important for your environment section. Recently, a bird survey was conducted at the Silent Valley National Park area in the last week of December. It is the 30th anniversary of the first bird survey was conducted in Silent Valley. This Silent Valley National Park is a representation of last of the remaining rainforests of Kerala, and it is located in the southwestern corner of Nilgiris. A perennial river named Kunthipuza also flows from this area, and this area is known for many highly endangered species. Indigenous tribal groups which lie within this area include Irulas, Kurumbas, Mudugas, and Katunaikas. So the next topic is virovore. This topic is important for your environment section. Recently, a microbiologist from University of Nebraska has found an organism that eats viruses. So it belongs to the species of protists. So protists or protista are basically eukaryotic single-celled organisms, and they have now found to be feasting on viruses, and uh, uh, they cannot be assumed to be any animal, plant, or fungi, but they are protists basically. So they are made up of nucleic acids, nitrogen, and phosphorus, and they are found to be sustaining themselves with viruses only. So it has numerous applications in case in the future we need to fight with more viruses. So the next topic is Sunni Dam hydroelectric project. So this topic is important for your economy section. So recently, central government has given an approval to the construction of Sunni Dam hydroelectric project in Shimla and Mandi districts. It will be a run-of-the-river project, which will be executed on Satluj River in Shimla and Mandi districts. It will be generating 1382 million units annually. 13% of the electricity generated will be provided free of cost to government of Himachal Pradesh, and the projects envisioned in the state are being done to fulfill the steady increase in peak electricity demand in the northern region. So the next topic is microplastics. This topic is important for your environment section. Scientists from South Korea have recently developed a new water purification system that can even quickly and efficiently filter out microplastics. So microplastics are tiny bits of plastic found in the environment, and as per US NOAA, uh, microplastics are less than 5 millimeter in length. So there are two kinds of microplastics. One is the of course the primary and the secondary one. Primary one is of course designed especially by us for commercial use, like for in use in cosmetics and microfibers construction, and the secondary ones are generally emerged out of breakdown of the larger plastic materials like water bottles. Okay, so the next topic is High Power Ladakh Committee. This topic is important for your governance and social issues both. So on January 2, Ministry of Home Affairs has constituted a high-powered committee chaired by Minister of State for Home Affairs, and the aim of this committee is to protect or discuss measures to protect the region's unique culture and language, ensure protection of land and develop employment of the people of Ladakh, and also strategize inclusive development and discuss issues related to empowerment of Ladakh Autonomous Hill District Councils of Leh and Kargil, which have been formed under the 6th schedule of the Constitution. So why was this committee formed? So this committee was formed after the repealing of Article 370 of the Constitution, because now the civil society organizations of Ladakh have been calling that their land, their resources, and their jobs needs to be protected. And what is the sixth schedule then? The sixth schedule under Article 244 of the Constitution protects the autonomy of tribal populations through creation of autonomous development councils. So as of now, 10 autonomous councils already exist in Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. And as per 2011 census, total population of Ladakh was almost 2.75 lakh, and nearly 80% of them are tribals. Okay, so please also download the current affairs compilation from our Telegram group for this week. We'll meet next time. Until then, goodbye and take care.